Hello friends, welcome to your YouTube channel. Today we will discuss the topic polynomials of class 10th. First of all, we will revise about the points which are important to the topic polynomials. What is a polynomial? As you can see, a polynomial is an algebraic expression in which variables do not occur in the denominator. Exponent of variables are whole number and numerical coefficient of various terms are real number is called a polynomial. Means कोई भी ऐसी algebraic expression जिसमें variables जो हैं वो denominator में नहीं होने चाहिए, variables के जितने भी exponent that means उनकी जो power है वो whole number होनी चाहिए और जितनी भी various term किसी भी algebraic expression में present है उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए. ऐसी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज f of x is equal to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 and in the same way so on it will go on and a1x plus a0. Here an should not be equal to 0. Why? Because this is a polynomial of degree n. If an is going to be 0, then the coefficient of x की power n will be 0 and this whole term will be go to 0. So it will remain a polynomial of n minus 1. This is the general representation of a polynomial of degree n. Now you know that polynomials are classified on two bases. First, polynomials are classified on the basis of number of terms and secondly, polynomials are classified on the basis of degree. If we talk about the classification of polynomials on the basis of number of terms, polynomials are classified as monomial, binomial and trinomial. What is a monomial? A polynomial having only one term means there will be a single term in an algebraic expression, then it is known as a monomial. For example, 2x, there is only a single term. Binomial, a polynomial in which there are two terms is known as a binomial. As you can see here, the example of a binomial is 5x square minus 3. There are two terms in this polynomial, so it is known as a binomial. Third one is trinomial. Trinomial is a polynomial which contains three terms. You can see by the example x plus y plus z. There are three terms x, y and z in the polynomial. So it is known as a trinomial. This is the classification of polynomials on the basis of terms. Secondly, polynomials are classified on the basis of degree. Polynomials are classified as linear, quadratic and cubic. Linear polynomial is a polynomial whose degree is 1. Quadratic polynomial is a polynomial whose degree is 2 and cubic polynomial is a polynomial whose degree is 3. Now you will ask a question that what is the degree of a polynomial. Hence degree of a polynomial can be defined as the highest value of the exponent in a polynomial is called degree of the polynomial. किसी भी algebraic expression में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2. सेम एज इन द सेकेंड एग्जाम्पल x की पावर 4 minus 16. Highest power of the variable is 4. Hence, degree of this polynomial will be 4. So, the highest power of the exponent in a polynomial is known as the degree of the polynomial. Moving further, a polynomial of degree 0 is called a constant polynomial. जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उन सब की डिग्री 0 होती है. फॉर एग्जाम्पल 5, -7 एक्सेट्रा. वाई देयर डिग्री आर 0? बिकॉज 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 into x की पावर 0. सो द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हेयर इज 0. सो डिग्री ऑफ ईच कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल डिस्कस अबाउट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. What is the zero of a polynomial? Any real number a is called as a zero of the polynomial f of x if f of a equals to 0. कोई भी रियल नंबर हो जिसको हम किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो तब बोलेंगे अगर हम उस पॉलिनोमियल में x की जगह वो नंबर रखें और हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिले तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल.
So a real number a is called a 0 of the polynomial f of x if f of a equals to 0. Moving further, what is the geometric meaning of the 0 of a polynomial? Geometrically, the 0 of a polynomial f of x are the x coordinates of the point where the graph of the function y equals to f of x intersect x axis. 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली अगर हम इसका मतलब देखना चाहें कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो उन पॉलिनोमियल का 0 होगा. Then the fundamental theorem of algebra says that a polynomial of degree n can have at most n real roots. कोई भी polynomial जिसकी डिग्री n है उसके at most n real roots हो सकते हैं. मीन्स मैक्सिमम उसके जो रियल रूट्स होंगे वो n होंगे, मिनिमम उसके रियल रूट्स कम भी हो सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल and the coefficients of a polynomial. Suppose we are denoting the zeros of a polynomial by alpha and beta. Since a quadratic polynomial, degree of a quadratic polynomial is 2, so it can have at most 2 roots. Here we have supposed that if alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x that is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, then the sum of zeros of the quadratic polynomial alpha plus beta is equal to minus b by a, whereas the product of zeros of the polynomial will be equal to c by a, where a, b and c are the coefficients of the various terms in the polynomial and alpha and beta are the zeros. So mainly in this chapter we have to study about the sum of zeros and the product of zeros and what is their relationship with the coefficients of the polynomial. Similarly, a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by p of x is equal to x square minus alpha plus beta of x plus alpha beta. You know that such type of questions are asked to you where sum of zeros will be given to you and product of zeros will be given to you and you are asked to find the quadratic polynomial. In these type of questions what you have to do is simply a quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros is given can be expressed as x square minus alpha plus beta of x plus alpha beta. Moving on further, if we will talk about the quadratic cubic polynomial. If alpha, beta and gamma are the zeros of the polynomial p of x equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a should not be equal to 0, this is actually the general form of a cubic polynomial. Then the sum of zeros of the cubic polynomial alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, where b is the coefficient of x square in the given polynomial and a is the coefficient of x cube in the given polynomial. In the same way, product of two zeros, sum of product of two zeros taken two at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha will be equal to c by a, where c is the coefficient of x in the given polynomial and a is the coefficient of x cube. Similarly, the product of three zeros alpha, beta and gamma of a cubic polynomial is equal to minus d by a, where d is the constant term and a is the coefficient of x cube in the given polynomial. This is the relationship between the zeros of a cubic polynomial and the coefficients of various terms in a cubic polynomial. Same way, if a cubic polynomial whose zeros are alpha, beta and gamma is given, then that cubic polynomial is given by p of x is equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma. So if you are given the three zeros of a cubic polynomial, then you can find the sum of the zeros, product of the zeros and sum of product of two zeros at a time. Then you can express the cubic polynomial in this way, that is x cube minus sum of zeros into x square plus
sum of product of two zeros taken two at a time into x minus alpha, beta and gamma. This was a quick revision of the topics covered under the chapter polynomials. Now we will solve some questions related to polynomials which have been frequently asked in your CBSE sample papers and will be asked in your board examination. For example, first question is 2x की power 4 plus 3x cube minus 5x square plus 9x plus 1 is which type of polynomial? Can you tell me what is the highest power of the variable in this polynomial? Highest power of the variable in this polynomial is 4. So degree of this polynomial is 4. It cannot be quadratic, it cannot be cubic, it cannot be linear. It is a biquadratic polynomial, and a polynomial whose degree is 4 is known as biquadratic polynomial. Moving on to the next question. Question is, for which value of p will the equation p square minus 1 into x square plus px plus q equal to 0 not be a quadratic equation? हमसे क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि p की किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं होगी जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाता है तो ये टर्म तो डिमिनिश हो जाएगी, और जब ये टर्म डिमिनिश हो जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा? पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. px plus q will be a linear polynomial. So in this question it is asked that for what value of p this equation is not a quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कब नहीं होगी? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0. दैट इज पी स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए ऑब्वियसली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पी स्क्वायर माइनस 1. For this equation to not be quadratic, this coefficient must be equal to 0. What we have done in the question? We have substituted it equals to 0. Then we have find the values of p, that is plus minus 1. Hence, for p equals to plus 1 and p equals to minus 1, this equation will not be a quadratic equation. So the right answer to this question will be both A and B. Moving on further, our next question is, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Firstly, in this question, we have to find the zeros of the quadratic polynomial, and secondly, we have to verify the relationship between the zero and its coefficient. For example, polynomial is given to you x square plus 7x plus 10. जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसमें को क्या करेंगे? सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. किसमें? पॉलिनोमियल इक्वेशन में. पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? px को अगर हम इक्वेट कर दें इक्वल्स टू 0, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिनोमियल इक्वेशन. नाउ इट इज कन्वर्टेड. नाउ बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, व्हाट वी विल डू इज split the middle term and find the zeros of the polynomial. So here the zeros of the polynomial are x equal to minus 5 and x equal to minus 2. नाउ हमारे पास जीरोज आ गए. अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करेंगे हम? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5. किसी को भी कंसिडर कर सकते हो. ये दोनों क्या हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है. तो जब आपने कंसिडर किया इसको तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस माइनस 5 दैट इज माइनस 7. और हमने फॉर्मूला से क्या पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है. तो जब हमें ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको अगर मैं कंपेयर करूंगी, किससे कंपेयर करना है मुझे? जनरल इक्वेशन से. और जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ से हमारे पॉलिनोमियल ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 7 एंड सी इक्वल्स टू 10. तो फॉर्मूला का यूज करके जब हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो क्या आया? माइनस बी बाई ए. तो माइनस 7 अपॉन 1 दैट इज माइनस 7. और जब हमने एक्चुअली सम ऑफ जीरोस किया तो भी माइनस 7. हेंस आवर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. इन द सेम मैनर व्हाट यू विल डू इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा. अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5. आंसर इज 10. एंड बाय फॉर्मूला
the product of zeros is equal to c by a, that is equal to 10/1, that is 10. Hence verified कि जो सही में sum of zeros आ रहा है वो फॉर्मूले से भी वही जीरो आ रहा है. Hence the relationship between the coefficient of various terms in a quadratic polynomial and zeros of the quadratic polynomial has been verified. Moving on further, we will take one more question of a polynomial. In this, find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given as alpha plus beta equals to 1/4 and alpha beta is equal to -1. हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है. तो हमने सीधे सीधे पढ़ा था कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है वो कैसे दे सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा. मीन्स कांस्टेंट टर्म तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस. तो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव सिंपली सब्स्टिट्यूटेड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दिस. तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4. तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला वो क्या हो गया, जो न्यूमरेटर में आया है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हम इजीली क्या रख सकते हैं, उस वैल्यू को रख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा प्लस बीटा हमें माइनस b बाई ए के इक्वल होता है जो कि हमें गिवन है 1/4. सिंस यहाँ पे +1 है और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब b की वैल्यू नेगेटिव रही होगी तभी ये प्लस आया. तो माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 4. इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए, और c बाई ए हमको क्या गिवन है, -1. तो -1 ये रहा. अभी यहाँ पे भी नीचे a है और यहाँ पे भी नीचे a है, तो हमको a को तो क्या करना होगा, सेम बनाना होगा. तो सिंस यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो हम 1 को इजीली 4 बना सकते हैं. तो जब भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो c की वैल्यू आ गई -4 और a की वैल्यू आ गई 4. अब इन दोनों से जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू हमारे पास आई 4, b की वैल्यू हमारे पास आई -1 और c की वैल्यू आई -4. और हमने जब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx c में ये वैल्यूज पुट की तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया. आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. इस मेथड में ध्यान रखने लायक ये चीज़ है कि ये जो कोफिशिएंट है ना नीचे a, इसको आपको सेम बनाना है. अगर ये सेम नहीं है तो इसको सेम बना के और फिर वैल्यूज़ को कंपेयर करना है. सो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड और अच्छे MCQs लाऊंगी जो कि रिसेंटली सैम्पल पेपर्स में और इसमें पूछे गए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.